Rajiv Malhotra ji is an Indian American researcher, a writer, speaker, a public intellectual on current affairs as they relate to civilization, cross-cultural encounters, religion and science. He studied his physics at St. Stephen's College in Delhi and went for post-graduation studies in physics and then computer sciences to the USA. At the peak of his career, he took early retirement at the age of 42 to pursue philanthropy, research, and public services. He established Foundation for this purpose in 1994. Rajiv Malhotra ji has conducted original research in a variety of fields and has influenced many thinkers. He has authored hundreds of articles, provided strategic guidance to the numerous organizations, and has over 300 video lectures available online. To best understand Rajiv's thoughts and contribution, his books are a good resources. Besides invading this cade and in which Rajiv is the main protagonist, he has authored the following books, game-changing books, one being Different, an Indian challenge to Western universalization, 2, Breaking India, Western interventions in Dravid and Dalit frontliners, and 3rd, Indra Net, Defending Hinduism Philosophical Unity, and 4th, The Battle for Sanskrit, is Sanskrit political or scared or oppressive or liberating, dead or alive. And lastly, the 5th one, Academic Hindu Phobia, a critic of N.D. Dogner, erotic school of Indology. So it's a brief introduction of Rajiv Malhotra. As I said earlier, it is very difficult to, put in words. Namaste. On this auspicious Mahashivratri day, I'm honored to be invited to share my thoughts in the presence of eminent thinkers. I want to discuss the idea of Bharatiya exceptionalism. So I will explain what I mean by this term, Bharatiya exceptionalism. I lived in USA for 46 years, and it's very important to understand that Americans are so proud of something they call American exceptionalism. So I've studied this, then I started studying Chinese exceptionalism, Russian exceptionalism, Japanese exceptionalism, and so on. And then I started asking what would be the equivalent for us. And thus came the idea of Bharatiya exceptionalism. Now, American exceptionalism means we, the American people, are exceptional. We are the best. We are the best in everything. Science, sports, you name it, we are number one. ये बात बचपन से हर एक बच्चे को सिखाई जाती है, स्कूलों में सिखाई जाती है. और दिस इज़ नॉट कि एक इंडिविजुअल एक्सेप्शनल है, एक यहाँ पर एथलीट है, यहाँ साइंटिस्ट है. इंडिविजुअल की बात नहीं है, सिस्टम. मतलब हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि वो एक्सेप्शनल लोग पैदा करते जाते हैं. द सिस्टम इज़ एक्सेप्शनल, नॉट सम इंडिविजुअल हियर एंड देयर. समटाइम्स वी इंडियंस लाइक टू से कि भी हमारा we have this man famous, that one very good, but actually American exceptionalism is saying कि हमारी जो संस्कृति है, American संस्कृति is what they are saying, that their American संस्कृति is itself exceptional. Now this is very great claim. So जो left wing है और जो right wing है अमेरिका में, both of them agree there is American exceptionalism. The Christian right says it's because of Bible.
we are chosen people, and America is a chosen land. In fact, a famous statement by Jesus Christ was called city upon a hill, means the ideal city is on a hill, it shines for the whole world. जैसे हम कहते हैं भारत को, Bharat has to show the light. So they have this idea from the Bible that there is a city on a hill. So when the Europeans were arriving in America, तो दूर से उनको लाइटें दिखाई दी थी. So they claimed that we have reached the city on a hill. मतलब ये America is that city on the hill जो बाइबल में बताई गई थी. And then many Americans said कि इतनी greenery है, this is the Garden of Eden. इस तरह से the idea of American exceptionalism is very deeply rooted in the Bible idea. So then जो left wing है, who don't want to use Bible, they also say we are exceptional. We are exceptional because of science, because of technology, because of freedom, because of creativity, because of American values, whatever. So American exceptionalism is common to both sides. Now, therefore, the question is, we have many kinds of Indians. They disagree, they fight, there's right wing, there's left wing. What is Bharatiya exceptionalism? We have to understand, we have to define, we have to discuss this idea. It cannot be that only one group of people believes in it and others don't. This is very important because in USA this is common. Every student is taught, every businessman knows this, every diplomat projects it, every politician talks about it. Now, this has a history and a philosophy, this idea of American exceptionalism. And it is propagated through parades, big museums, flag. जो American flag है, वो एक तरह का देवता है. It is literally, there is procedures, official procedure, how you ritual of the flag, how you fold the flag, how it has to be done, very precise. Like we have Agama, कि कैसे पूजा करनी देवता की. So this is like American equivalent of Agama for the flag. It's very amazing. National anthem. Now it's sad in our country, sometimes people don't respect these things in India. But in USA, this is considered a very normal duty of every citizen, that you respect these symbols. So इससे उनको confidence है. Now American exceptionalism includes many things in the essence which don't make sense to many people. Like right to carry guns. Now you will say, ये क्या बात हुई? Right to carry guns? After all, we live in a civilized era. Why does citizen have to have right to carry guns? But American Constitution gives you right to carry guns. Because when they originally came, तो वो जो उनके founding fathers थे, they needed guns, they were carrying guns, so this became part of the myth of greatness, the myth of American exceptionalism. And so this is cherished as part of, who the nation is. So whether it is logical or not is not the point. It is a kind of a shared myth, a shared kahani. Now, there is something similar. I visited all these places. I visited a place called Japan Foundation. Spent long time researching. Then I visited Korea Foundation. I visited many Islamic organizations in US to see कि उनकी narrative क्या है. How they propagate their narrative. Then Chinese have a place called China Institute. They have 100 branches all over the world. Now they feel they are modernizing but not westernizing. वहाँ सिखाया जाता है कि modern China is based on Confucian thought. Confucian is their old philosopher. मतलब उनका जो काफ़ी ancient philosopher था, Confucius उसका नाम था. So Confucius की जो thought है, उसके ऊपर ही वो modernize हो रहे हैं. Not कि वो switch करके western बन गए हैं. So China insists modernization is not westernization. It's Confucian modernity. तो ये बहुत interesting बात है. तो फिर हमने सोचा कि what would be Bharatiya exceptionalism. Now ये जो American exceptionalism है, वो उनकी दृष्टि है, वो उनका लेंस है. उस लेंस से वो अपने आप को समझते हैं और बाकियों को भी समझते हैं. सो तभी जब अमेरिकन्स इंडिया के बारे में, भारत के बारे में विचार करते हैं और स्टडीज़ करते हैं, उनकी स्टडीज़ बहुत काफ़ी लार्ज स्केल में होती है. उसको साउथ एशियन स्टडीज़ कहते हैं, जिसको यूरोप में इंडोलॉजी कहते थे. तो ये जो साउथ एशियन स्टडीज़ है वो उनके अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के विचार के साथ ही जुड़ी हुई है. चर्च स्टडी करती है इंडिया को,
फोर्ड फाउंडेशन और उस तरह की काफ़ी फाउंडेशंस इंडिया को स्टडी करती हैं, NGOs को वो पैसा भेजती हैं। अब आजकल फैशन है थिंक टैंक्स, अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं वो आ गए हैं इंडिया में, उन्होंने ब्रांचेस खोल रखी हैं, वो भी अपनी दृष्टि के अनुसार इंडिया को स्टडी करती हैं। सो अमेरिका यूजेज इट्स अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म लेंस टू स्टडी एवरीबडी। सो इफ वी वांट टू रिवर्स द गेज, सब समझो हम पूर्व पक्ष करना चाहते हैं चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, सब देशों के, तो हमको पहले तो ये समझना होगा कि हमारी दृष्टि क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, उसके अनुसार ही पूर्व पक्ष करेंगे। सो ये जो सिद्धांत है, दृष्टि है, इट्स लाइक आवर लेंस, जैसे उनका लेंस है अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म। सो एक ज़माना था, द इंडियन नैरेटिव वॉज रामायण वॉज द इंडियन नैरेटिव। एक मेरे को किसी ने कहा कि दिस बिजनेस ऑफ नैरेटिव वैरेटिव इंडिया की बात ही नहीं है, वी डोंट बिलीव इन इट। इंडियन लोगों ने कहा मेरे को, वी डोंट बिलीव इन इट। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट वाज इंडियाज नैरेटिव वाज रामायण। हर एक विलेज में रामायण वाज, रामलीला होती थी। व्हेन आई वाज टीनेजर, आज से 50 साल पहले, दिल्ली में हर साल हम रामलीला करते थे। एवरीवन वुड जॉइन एंड पार्टिसिपेट। सो दिस वुड बी बॉन्डिंग, अपने नेबर्स के साथ बातचीत करो, मिलो, एंड एक्ट करने से वो जो कहानी है वो हमारी कहानी है, वो हम टीवी पर किसी और की कहानी नहीं देख रहे थे, अपनी कहानी, ये हमारी कहानी है जो हम एक्ट कर रहे हैं। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टीवी रामायण, विच इज़ के भी वो लोग कर रहे हैं, उनकी बात क्या है। सो आई थिंक दिस separation happened also. We started thinking of Ramayana as, a story about those people. While previously for 1000 years, हर एक इंसान की अपनी कहानी थी. Today, I come to India 4 times a year at least for the last 45 years. So I meet all kind of people. I go around. So one meeting I saw Ashish Nandi, well-known scholar, intellectual. So he said his identity is, he said, I'm Bengali first, second I'm Christian, third I'm scholar, India ki baat aati nahi. This is what he said. There is no India in this identity. And this business of Indian or Bharati is forced by chauvinists and this, that was his idea, whole theory. After the talk I asked him, what is the Indian or Bharati grand narrative? Like there is an American one, Chinese, ये वो, तो वो चुप हो गए। मैंने कहा why should Indians keep together as a nation? What is the reason for staying together as a nation? There is so much diversity. What keeps India together? And he said, हाँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब such a important scholar not thought of this. Then I also had lot of arguments with John Dayal, who was under the previous government. He was the head of the National Integration Council. Actually, he should be a National Disintegration Council. Because all this nonsense, completely anti-narrative. Now, 2-3 years ago, I was invited by Foreign Service Institute, Ministry of External Affairs, to give a talk. So I talked about this to the diplomats, the young batch of students. You have to represent brand India. India is the brand, you have to represent it. So what does this brand India mean? You must know. So I was telling them this Bharatiya narrative, Bharatiya grand narrative, उसके क्या क्या खूबियाँ हैं, उसमें क्या क्या differences है, किस प्रकार वो अलग है बाकियों से. And I was explaining the mathematics, the science, the philosophy, the yoga, the agriculture, how these things are exported for long time. I was giving that. उसके बाद जब Q&A हुआ तो 2 प्रकार के students थे, half and half. Half of them were very proud, very happy. वो कहते हैं कि हमको ये सिखाया नहीं जाता, हमको सीखना चाहिए, कहाँ से सीखें, कहाँ पुस्तकें हैं आपकी और पढ़ेंगे, हमको बचपन में नहीं सिखाया, स्कूलों में नहीं सिखाया, यहाँ पर फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी किसी ने नहीं सिखाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू लर्न. So I was happy. The other half were very angry at me. One of them said, I am from Northeast, I don't believe in this narrative. हमारा तो अलग ही narrative है. Someone said, मैं दलित कास्ट का हूँ, I have been oppressed. Now I was very upset कि ये लोग इंडिया को, भारत को represent करेंगे.
They are going to be the brand managers, brand ambassadors, and they don't believe in the product they are representing. So imagine if you are in charge, if you are industrialist and the people representing your brand, the vice president of marketing says, "I don't even believe in this brand." So this is very strange कि ये जो foreign service में लोगों को select किया जाता है, उसमें patriotism का, Indian civilization का, इस तरह का कोई selection criteria है नहीं. Somebody can just pass an exam in some subject, get marks and get in. You have to also filter them for ideology. Yeah, I don't know why this is the case. Now, before talking about Bharatiya narrative, we have to first disrupt the anti-narrative. आजकल anti-narrative है. वो anti-narrative को हमको समझना है और उसको उखाड़ना है. यदि आप एक बगीचा बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप फूल लगाना चाहते हैं, तो फूल लगाने से पहले जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाल कर फेंकना होता है. यू हैव टू गेट रिड ऑफ वीड्स, पेस्ट्स, उनको निकालना होता है. उसको हम डिसरप्शन कहते हैं. और फिर जो बगीचा बनाएंगे उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं. उसको कंस्ट्रक्टिव थॉट और डिसरप्टिव थॉट, ये दोनों चाहिए. सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बोली जाएंगे तो उससे पूरा काम नहीं होगा. आप जितने मर्जी फूल लगाई जाएं वो मरे जाएंगे. यू हैव टू पुल आउट जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर है, जो गलत चीज़ें हैं पहले की, वो निकालनी पड़ती है. तो ये जो काम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसरप्टिव. उसमें लेफ्ट है बहुत स्ट्रांग. हमने पहले तो वेस्टर्न थॉट के ऊपर काफ़ी विचार किया, पूर्व पक्ष किया. फिर जो इंडिया में लेफ्टिस्ट है उनके ऊपर भी बहुत कुछ किया. और ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, एक पुस्तक है हमारी ब्रेकिंग इंडिया. ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में हमने दिखाया कि जो फॉरेन नेक्ससेस हैं, ये रिलीजियस मल्टीनेशनल्स हैं, और ये जो ये फाउंडेशंस हैं, फोर्ड फाउंडेशन है, थिंक टैंक्स हैं, इस तरह के कई प्रकार के जो लोग हैं यहाँ आए हैं, उनके साथ भारतीय लोग भी जुड़ गए हैं जिनको हम सिपॉइस कहते हैं. वो उनके साथ जुड़ गए हैं, उनको पैसा मिलता है, वो उन्हीं की आइडियोलॉजी है, उन्हीं एक भी वेवलेंथ में. कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी एक ही है और भारत को तोड़ने का षड्यंत्र वो तैयार कर रहे हैं. अब इसके बारे में ये पॉइंट पर या कितने सेमिनार हो सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं अभी सेमिनार्स. हमको हम जब यूएसए में आर्ग्यू करते हैं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया और आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस आइडिया इज़ नॉट इंडियन आइडिया और भारतीय आइडिया, इज़ अमेरिकन वेस्टर्न आइडिया, तो हमको कई बार वो लोग चैलेंज करते हैं कि हुज इंडिया? इज इट द दलित्स इंडिया? इज इट द मुस्लिम्स इंडिया? इज इट द ब्राह्मण इंडिया? इज इट द वुमेन्स इंडिया हु गॉट मर्डर्ड? मतलब वो हमको डिवाइड करने का उनका विचार ये है कि देयर इज़ नो वन आइडिया. और टर्म उसकी है सब नेशनलिज्म. सब नेशनलिज्म मीन्स कि छोटे छोटे कितने सारे नेशंस हैं, कोई एक नेशन है ही नहीं और एक नैरेटिव है ही नहीं. आप गलती कर रहे हैं, सबको ज़बरदस्ती एक नैरेटिव सिखा रहे हैं, और ये सिखाने के लिए आपका कोई शोविनिज्म है, कोई एजेंडा है, क्योंकि एक नैरेटिव है ही नहीं. सो ये जो इसको सबॉल्टर्न स्टडीज़ कहा जाता है, ये जो फील्ड है जहाँ पर ये नैरेटिव इंडिया, जो भारत का नैरेटिव, उसको तोड़ने का षड्यंत्र है. अब ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं, जब उसके बारे में इतिहास होता है, उसके बारे में हिस्ट्री सिखाई जाती है, तो वो उनको जस्टिफाई किया जाता है कि वो इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे. उनको लोगों को इमेंसिपेट करने के लिए, उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन से उनको ह्यूमन राइट्स देने के लिए वो लोग आए थे. वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर जो अपर कास्ट है, और ये कुछ लोगों ने बाकियों को दबाया हुआ था. आर्यंस ने द्रविडियंस को दबाया था, ब्राह्मण्स ने दलित्स को दबाया था, हिंदूज ने मुस्लिम्स को ऐसे दबा के रखे थे, आदमियों ने औरतों को. तो इसलिए उनको फ्रीडम लेने के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए ये लोगों ने इन्वेड किया था. ये बहुत अक्सर हिस्ट्री में सिखाया जाता है. तो ये जो सेपरेटिस्ट हैं आजकल, ये पहले आइडियोलॉजिकल सेपरेटिस्ट होते हैं. पहली स्टेज है आइडियोलॉजिकल सेपरेटिस्ट, उसके बाद ये फिर ये फिजिकल वायलेंस वगैरह शुरू होती है. ये आप समझिए, जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ भी आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उससे 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले वो आइडियोलॉजिकल सेपरेटिस्ट होना शुरू हो रहे थे. उसके लिए फंडिंग आती है, उसके लिए विचार अलग आते हैं, उसके लिए रिसर्च आती है, लोगों को ट्रेन किया जाता है. तो इस पर ध्यान देना चाहिए. अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें हमारे भी गुरुओं का भी कुछ हाथ है. उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन जब हम अद्वैत की बात करते हैं तो कई बार इंडिविजुअल लेवल पर और ब्राह्मण के लेवल पर, ये दो लेवल सिखाते हैं.
पर उनके बीच में भी लेवल्स हैं। उनके बीच में है फैमिली, अपनी विलेज कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन, ये भी लेवल्स हैं। ये इन पर इतना ध्यान नहीं होता। ये होता है कि मैं इंडिविजुअल, मेरा क्या धर्म है, और वन विद ब्राह्मण, सब एकदम ऐसे मैं बाईपास करके, सारे लेवल बाईपास करके एकदम मैं वन विद ब्राह्मण हो जाऊंगा। तो पर हमको देश का भी ध्यान देना है, देश की भी रक्षा करनी है। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं कई लोग सामना नहीं करना चाहते, उसको कहते हैं ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया सर। अब मैं इस प्रकार की जब भाषण देना चाहूँ, 90% टेम्पल्स जो हैं वो पिछले 20 साल 25 साल पहले यूएसए में वो अलाउ नहीं करते थे कि हम ये ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं करते, हम तो सिर्फ पूजा करेंगे और ब्राह्मण के साथ जुड़ जाएंगे। बट चर्च, सिनेगॉग जूस का, मदरसा, बुद्धिस्ट, ऑल अदर रिलीजन्स, दे टॉक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज अबाउट सोसाइटी। हिंदूज वेरी स्कैर्ड। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। अब थोड़ा उनको आफ्टर 9/11, क्योंकि बाकी कल्चर वाले, बाकी रिलीजन वाले लोग ओपनली ऐसी बातें कर रहे हैं, अब थोड़ा हिंदुओं को भी हौसला है कि हम भी बात कर सकते। लेकिन अभी तक काफ़ी गुरु ऐसे हैं इंडिया में जो कहते हैं कि हम ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवत गीता में तो धर्म अधर्म की बात ही है। इट इज़ द होल थिंग इज अबाउट, यू कैन नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। इट इज़ नॉट जस्ट के अपनी आध्यात्मिक बात है सिर्फ, यू हैव टू मेक सोशल इंगेजमेंट, अदरवाइज भगवत गीता महाभारत का फ़ायदा क्या हुआ? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ऑल्सो ये जो अर्थशास्त्र है, इट इज़ नॉट टॉट इनफ। अर्थशास्त्र ज़्यादा नहीं सिखाया जाता, धर्मशास्त्र ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। सिर्फ हमको उपनिषद गीता में अद्वैत आकर और उसके ऊपर हम चलेंगे तो ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू डू दैट। But we also need to introduce other texts which are practical, social, political. And our gurus and teachers have to start expanding the curriculum. अब करिकुलम को एक्सपेंड करेंगे अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, तो फिर आपको ये नहीं होगा कि हम इस तरह की बातें ना करें, ये कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज आफ्टर ऑल वर्ल्ड इज़ कंट्रोवर्शियल, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। तो वो कंट्रोवर्सीज को जो हम नहीं डील करेंगे तो अगली पीढ़ी वाले बच्चे कैसे डील करेंगे? वी हैव टू टीच देम कंट्रोवर्शियल थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज दे हैव टू फेस ऑल दिस। अब ये जो इंडियन most people in this country, I'm sorry to say, I went to St. Stephen's College, Delhi, and whenever I come, वहाँ के लोग they get together, we have a nice dinner, कुछ मतलब good event, I'm very happy, and all of them are doing very well, but they're very embarrassed about these topics. Most of them want to join the Western grand narrative. They feel कि हमको किसी ना किसी प्रकार we want admission into the Western grand narrative. मतलब वहाँ पर कोई हमारे को रोल मिल जाए, चाहे छोटा सा ही रोल मिल जाए, चाहे वहाँ हम नौकरी बन जाए, चलो ठीक है, कम से कम वहाँ आप पहुँच तो गए। मतलब इट्स लाइक हम अपने नैरेटिव को छोड़ के किसी और के नैरेटिव को पकड़ेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। सो दिस inferiority complex is there regarding our idea of Bharat. There is a strong inferiority complex we have to deal with. अब देखिए, one of the So, some people want to join the Western narrative. Unfortunately, a lot of my Muslim friends, when we were children, we were all very friendly, nice. I feel many of them have gone into the Arab narrative, more fashion to become Arabized. Language, identity in general, almost like वो superior हैं, तो be the path for Muslim is to become more and more Arabized. This is kind of going on. And of course the Shiite want to go with Persian narrative. So this Arab Sunni narrative and Persian Shiite narrative is also taking a lot of the young people. Islam is not about Arabization. It is not about one ethnicity or one language or one geography. You can be a good Muslim anywhere in the world, in the local language, local customs, local everything, local culture. There is nothing that requires you to separate. So, question is whether you're Indian first. That is the question. But the foreign nexus wants to keep promoting कि आपको to upgrade you from ordinary first level Muslim to second level to third level Muslim, you have to become more ashraf, more Arabized. You see.
So this is a very serious matter for us because this breaks the idea of the Bharatiya grand narrative. The Bharatiya grand narrative has to come first and others have to be accommodated. Others have to live in accordance with this, with respect. So मेरे को पूछा जाता है कि in this idea of Bharatiya grand narrative, what is your proposal for minority religions? So I want to answer that. Minority religions which are foreign based is the biggest challenge because they came from abroad. So their links are like that. And so the question is, if we avoid this topic, we'll never resolve it. But we are all one. We are all Bharatiyas. We have to resolve it. So I have three requirements or three things which are needed to make all foreign religions very Bharatiya with nothing second class, total Bharatiya. First, they should accept the principle of mutual respect. Mutual respect, मेरी एक book है Being Different, जिसका ये अनुवाद है विभिन्नता हिंदी में. If you want, I can get you a copy of this. ये mutual respect is not same thing as tolerance. Tolerance जो वेस्ट में सिखाई जाती है, मतलब I tolerate you, मतलब वो respectful बात नहीं है. Mutual respect means I respect you for however you are. आपका जो difference है, आप अलग तरह से पूजा करते हैं, आपके customs अलग हैं. I respect you, but mutual means you must respect me. It is not one way. It is not I respect you unconditionally. So I will not respect ISIS because they refuse to accept others. They refuse to respect others. I will not respect Bin Laden because he doesn't respect others. Mutual respect means I am willing to, very interested in respecting you provided you also respect me. यदि ये हो जाए तो फिर then we are not trying to convert each other, we are not trying to compete, we are not trying to say हम ज़्यादा ऊपर हैं तुम कम. So mutual respect is an offer we should give always to people. वो भाग जाएंगे. They are not interested in accepting it. They have to get embarrassed for not willing to accept it. I go all over the world in these interfaith events and I always put this on the table and it is very interesting what the reaction is. And now some people have started copying this vocabulary, mutual respect. India maybe, Bahar maybe, but they need to understand it in more detail rather than just vocabulary. Second requirement I have is that the minority religions, Christian and Islamic, should disown the adhikar and authority of foreign headquarters. This is something China has done. China says China is one of the largest Christian populations in the world. But bishop cannot be appointed by the Vatican. It is appointed locally. There is no headquarters deciding आप क्या करेंगे, किसको job मिलेगी, कौन bishop बनेगा, क्या उसकी ideology होगी. They said ideology cannot come from elsewhere because you can be Christian here, fine, we have no problem, but it is totally Chinese church, totally Chinese church. Not only कि language होगी, हम language तो church India में भी local use करती है और local कपड़े डालती है ये वो, but the appointment of the top people comes from Vatican for all bishops. So this means loyalty तो वहीं है. After all वो मेरे को hire करेंगे, fire करेंगे, किसको promotion मिलेगी तो अब मैं उनका चमचा बनूंगा ना. So the second requirement I have is the authority should be taken away from the foreign headquarters of these religions and they should become 100% Indian and not listen to the adhikar, the interpretation के कुरान की final authority interpretation वहाँ बैठा है, वहाँ कौन बैठा है? Why can't we have our own authority to interpret these texts? Third is the Indians belonging to these Christian and Islamic faiths must accept the history of violence and oppression of people of those religions when they came to India, must not deny it, because it is not the fault of today's Muslim that some Aurangzeb did these things. It is not the fault of today's Christian that some Christians did these things. He should say, I'm Bharatiya first, and I'm with my brothers and sisters who are Bharatiyas, but these people who came did the wrong things. I want to be Muslim in accordance to Islam, but I do not accept that this Aurangzeb, what he did was the right thing, and I also condemn him. That is a requirement that I would have. So with these three principles, we can have a nice integrated. I'm writing on this also, quite a lot of things I'm writing on this. So I'll conclude by saying that once we understand these problems, we need good brand ambassadors. I'm going to do a Hindu Student Council in USA has 50 university chapters.
and I work with them. So in April, they are doing something in MIT. So they'll bring the top 10 students, Hindu students from around USA, to question answer with me कि how to be Indian, how to project, कैसे कहना है, कैसे नहीं, क्या क्या है. मतलब उनको हमने कहा कि जो आपके most serious questions हैं वो मुझे पूछिए. Whatever you are embarrassed, whatever people embarrass you with, you tell me, I will answer. Whatever is not easy, not explained by your people, whoever, gurus, parents, whatever, I will answer. So ये हम video tape करते हैं. I do this on a regular basis to teach our young people how to be ambassadors of our dharma. This is also to be taught to diplomats. This is also be taught to military. This is also be taught to industrialists. The Young Presidents Organization, YPO, which is for young industrialists, I've given talks in Chennai, in Bangalore, in Calcutta, also in Delhi, to the YPO. And they understand that when they are going overseas, if they had a better idea of how to project Indian culture, it would be good for business also. Because when you are negotiating, the Chinese industrialist is very clear on his history and his whole background and his own ideology. He's very clear. The Japanese knows Japanese, what it means to be a Japanese. The American is very proud about American exceptionalism. The Frenchman, you better not confuse him with the Englishman because he finds it insulting. You better know why he's so proud of being French, Russian similarly. सारे लोग अपने culture में they are very proud. Indian is not very sure. He can talk Bhangra and Bollywood and cricket and maybe tandoori chicken and things like that. But he is not too sure about the gehrai ka jo kya tattva hai. He cannot really explain, and they want to learn. That is why I have been talking, giving some talks there. So the final point I will make is 2 points. One is the Constitution of India is not Bharat friendly. This is something we have to understand. How to do it, change it, I don't know. But I think we have to start the conversation. We have to start the conversation where we take Arthashastra, we take Dharmashastra, we take basic ideas of Bharat, and then we start having conferences and discussions. My foundation, we have already started something called Infinity Foundation India, which is 100% India foundation. So we are having Swadeshi Indology conferences. तो उसमें हम ये टॉपिक्स करेंगे. एक टॉपिक होगा ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, भारत एंड वर्सेस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अलग बातें हैं. वी आर ऑल्सो डूइंग कॉन्फ्रेंस ऑन आर्यन द्रविडियन होल दैट डिबंकिंग दैट होल थियोरी. इस तरह से हम कई टॉपिक्स लेकर अबाउट भारतीय नैरेटिव, ऑल ऑफ देम आर टॉपिक्स अबाउट भारतीय नैरेटिव. वी आर टेकिंग देम 2-3 conferences every year. Final point I have is just talks is not good enough. You need serious research. अब देखिए रॉकेट लॉन्च होता है, वो तो बहुत अच्छा इवेंट होता है, पर रॉकेट लॉन्च के पहले कई वर्ष रिसर्च होती है. यू हैव टू फर्स्ट फंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ताकि रॉकेट तैयार हो, तब फिर वो लॉन्च का इवेंट हो सकते. इफ़ यू डो नॉट फंड रिसर्च ऑन ऑल दीज टॉपिक्स बट यू कीप हैविंग सम्मेलन, मंथन, मेला, कॉन्क्लेव, लिटरेरी फेस्टिवल, ये तो चलते आ रहे, एवरी वीक देयर इज़ वन. तो वो सेम पीपल गोइंग टॉकिंग सेम थिंग्स, लेकिन जो गहराई का काम है, ओरिजिनल रिसर्च का काम है, वो कौन करेगा? एक दूसरे से कॉपी करते जाएंगे, वही बात रिसाइकल होती जा रही है. लेकिन ओरिजिनल रिसर्च करने के लिए वी नीड सम वेरी सीरियस रिसर्च सेंटर्स. तो वो हमने इन्फिनिटी फाउंडेशन इंडिया स्टार्टिंग दैट. वी आर कमिटेड टू क्रिएट ब्रांड न्यू 108 स्कॉलर्स, टॉप नॉच डीप स्कॉलर्स, जिनको संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उनको दे नो हाउ टू डिबेट, और स्पेशलाइज्ड एरियाज में होंगे. तो अभी हमारे 15-20 तैयार हो गए हैं पिछले साल में. हर साल हम we want to add another 10-20 more, or we will hold them together, give them international exposure. अब एक Washington DC में हम conference करेंगे where we will give a criticism of, from the Indian point of view, we will give a criticism of the American study of India through churches, through think tanks, through NGOs, through foundations, through academics, through media. हर का एक टॉपिक लेकर we will give a response. हमारे scholars करेंगे who are solid Sanskrit scholars, but we will teach them how to argue, ताकि लोगों को भी सारी दुनिया में लोगों को मालूम हो कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन को बोलने वाले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कॉलर्स हैं. Now problem is, हम कुछ स्कॉलर्स को तैयार करते हैं and 10 other people want to poach them. Nobody wants to do the hard work to create scholars. Everybody wants to grab hold of them. So poaching scholars is not going to increase the number of scholars. वो तो एक दूसरे को, and poaching ideas and knowledge is also not going to help.
we have to, everybody has to invest. You know, if you want more fruits, you have to grow more fruit trees. It will take 5 years before it starts giving fruit. और जब हमने 5 साल मेहनत की, तपस्या की, काफ़ी कुर्बानी की, इन्वेस्ट किया, और हमारे जब फ्रूट ट्रीज तैयार हो गए, बाकी लोग आके फ्रूट खा गए, तो हमारे को क्या, मतलब इट्स नॉट वेरी फेयर. एंड हमारे पीपल विल कम एंड ईट आवर फ्रूट एंड दे से, सब सर हम तो आपकी प्रेज कर रहे हैं, आपका फ्रूट तो बहुत ही अच्छा है, और फ्रूट इज़ वन, फ्रूट इज़ फॉर एवरीबडी, लाइक दैट. The point is that if you really want to help, you must invest in expanding the supply, not the consumer side, कि अब हम consume करते जाएंगे. ये जो knowledge है, इसकी supply increase करने के लिए आपको invest करना होगा. You can come and help us expand, or you can start your own, we will help you. But let's create more scholars, and let's create more scholarship, and not just more manthans repeating the same thing. And let's not poach each other's scholars, but respect that we are building our home team of 108, you should build your home team, and we should all work together. धन्यवाद. एक विचार आया नैरेटिव के बारे में. मैंने राजू मल्होत्रा जी ने कहा, हम अपने नैरेटिव, भारत के नैरेटिव नहीं करते, दूसरे नैरेटिव में जीना चाहते हैं. भगवद गीता में यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह. इसीलिए कहा होगा हमको अपने नैरेटिव में रहना है, दूसरे के नैरेटिव ये भयावह होता है, उसका कई परिणाम हम देख चुके हैं. तो इसलिए इस विषय पर विचार करें, और करते समय कई अपने देश के इस भारत बोध से दूर रहने के जानबूझकर प्रयास करने वाले लोग, जिनके बारे में राजू मल्होत्रा जी ने विचार रखा, ऐसे लोगों के संदर्भ में भी आपने रखा, और लोगों को भारत बोध से दूर रखने के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है. ऐसे लोग भी इस प्रकार के सभी प्रयत्नों के सामने चुनौती होते हैं. तो राजू मल्होत्रा जी ने एक विषय कहा कि वायलेंस के संदर्भ में आपने कहा कि हिस्ट्री ऑफ वायलेंस वो एक्सेप्ट करना चाहिए. वो एक्सेप्ट करना छोड़िए साहब, इस देश के अंदर बौद्धिक क्षेत्र के ऐसे लोग हैं, वायलेंस हुआ ही नहीं है ऐसे कहने वाले हैं, तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए तो समस्या है. तो इसलिए इतिहास को सही अर्थ में प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है. एक्सेप्शनलिज्म के संदर्भ में बिल्कुल भगवती प्रकाश जी ने, जो मैं राजू मल्होत्रा से अभी मंच पर बात ही कर रहा था, आपने जो बताया, और माइक के द्वारा डॉक्टर भगवती प्रकाश जी ने वही कहा, भारत के जो एक्सेप्शनलिज्म है वो समन्वय में है, सामंजस्य में है, सर्वसमावेशकता में है. हम पांतिक समाधरता पर विश्वास रखते हैं. जूस और क्रिश्चियन दोनों लड़ेंगे तो मैं हिंदू जाकर उनको ठीक कर सकता हूँ, ऐसे राजीव जी अभी यहाँ मुझे कह रहे थे. ऐसे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप दोनों को समादर करने वाले हैं, ये दुनिया आपको मानती है, तभी कर सकते हैं. दैट इज अवर एक्सेप्शनलिज्म. कर्तव्य और अधिकार के बीच, अभ्युदय और निःश्रेयस के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच, धर्म और अर्थ काम के बीच एक संतुलन, समन्वय, सामंजस्य बिठाने के जो एक्सेप्शनलिज्म हमारा है, उसी कारण राष्ट्र के वैभव के दृष्टि से, जो राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, अन्य अन्य आयामों में एक इस प्रकार के एक्सेप्शनली संतुलन और समन्वय बिठाने के जो एकात्म दृष्टि से विकसित होने वाले राष्ट्र के चिंतन के में संभव है. लेकिन इन चीज़ों को हम वर्तमान और आगे की पीढ़ी के कैसे कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए. महर्षि अरबिंदो ने एक विचार कहा था, उसको कहकर मैं मेरे कर्तव्य समाप्त करता हूँ. महर्षि अरबिंदो ने कहा एक जगह पर, उनके फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में उन्होंने कहा है, हमारे पास बहुत है. पिछले सत्र में लीना महेंद्र जी ने कहा, पहले के कहते हैं, आगे के कहने चाहिए. तो महर्षि अरविंद ने कहा कि अपने पास जितने हैं उन सब के बारे में आज क्या है, भारत बहुत इसी दृष्टि से है. हम अपने पास जो ज्ञान संपदा है उसका पूरा अध्ययन करें, कैटलॉगिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, आज की भाषा में मैं कह रहा हूँ, उन चीज़ों को प्राप्त करें, अध्ययन करें. ये एक बात है. महर्षि अरबिंदो ने हम सबसे अपेक्षा की है. दूसरी बात, हम केवल अध्ययन करें, उसको करें ऐसा नहीं, वर्तमान युग के लिए युग धर्म के साथ उसको कैसे प्रस्तुत करना है, आर्टिकुलेशन टू द मॉडर्न टाइम्स, ये दूसरी बात हमको करनी चाहिए.
तीसरा है जो बहुत कठिन है, ये स्वयं महर्षि में द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, हम इस ज्ञान संपदा को आने वाले युग के लिए नए ज्ञान को सृजन करते हुए इसको जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। ऋषि ऋण चुकाने का काम वो है भारत बोध, यही है, ऐसे मैं मानता हूँ। नमस्कार। On behalf of Indira Gandhi National Open University and Bharat Shiksha Mandal, I thank Rajiv Malhotra ji and Bhagwati Prakash Sharma ji, and also Adaniya Datta ji for chairing this session. Thank you all. Thank you very much.